So let's start our lecture. Hello and very good morning to each and everyone. Welcome to the Mining Gyan. So it is our lecture number 2 of mind ventilation, and today we are going to cover up the gases which we haven't completed yesterday. In this lecture, we will complete those gases, about those gases, the details of those gases. Okay. So let's start the lecture. First of all, I would like to give you some details about the common difference between the toxic gases and the poisonous gases. First of all, you have to understand the difference between toxic gases and poisonous gases. Toxic gases, what are toxic gases? Basically, toxic gases are the substances that when inhaled or ingested or absorbed through the skin in sufficient quantities can cause harm to the living organisms. Okay, whenever you inhale any of the toxic gases, then in that case it will harm uh, the living organism, okay, in various ways. What are the harms that are caused by the toxic gases? Basically, they cause the acute or chronic health effects ranging from irritation to the organ damage, from irrigation from irritation, not irrigation, from irritation to the organ damage or even death. It depends on the concentration and the duration of the exposure. What are the effects of the toxic gases? Toxic gases basically affect your organs. They damage your organs, or they may cause irritation, like irritation on the skin. These are the effects of the toxic gases, and it may cause death, even death. And if the duration of the exposure or the concentration of the gas is such that it can cause even death to you, okay, it may be much more harmful than earlier. Okay. And what are the sources of the toxic gases? Toxic gases are the naturally occurring or man-made. Okay, they can be naturally occurring or man-made. Basically, if we talk about the man-made, the toxic gases are produced from the industrial processes, combustion, chemical reactions, or the volcanic activity. Okay, like carbon monoxide is a type of toxic gas. Hydrogen sulfide is a toxic gas. Okay, chlorine, ammonia, sulfur dioxide are the common examples of toxic gases. Okay. Next one. Next one is the poisonous gases. So what do you understand by the poisonous gases? Poisonous gases are the substances that, when introduced into the body, is insufficient quantities, interfere with the normal physiological functions, leading to illness or death. Basically, if we talk about the okay, I will explain in Hindi also. Don't worry about that, Kamlein Singh. Okay. Now, if we talk about the poisonous gases, if you used to inhale the poisonous gases in sufficient quantity, or it is introduced into your body in sufficient quantity, then in that case, the poisonous gas will make you ill. Okay, it will cause a disease, anything it can. Okay. This is the basic difference between toxic gases and poisonous gases. Toxic gases, they also used to harm your body, but the effect they used to produce on your body is different. Like, if you see the effects of the poisonous gases on your body, that it will disrupt the biochemical processes, such as inhibiting enzyme activity or interfering with the oxygen transport, or which can result in systemic toxicity. Okay. Basically, poisonous gases are such gases which used to interfere with the oxygen transport. Now, if we talk about the carbon monoxide, just take an example of the carbon monoxide. Carbon monoxide is a toxic gas as well as it is a poisonous gas. Why? Because as you will inhale the carbon monoxide, it will dysfunction your organs.
Okay, it will damage your it will damage your organs basically, and at the same time it will also interfere the oxygen transport, because it makes the blood uh, much more thicker than it is. Okay, and so if we talk about the sources of the poisonous gases, poisonous gas can originate from natural sources like plants or animals, as well as from synthetic chemicals which are used in the industry, agriculture, or warfare. Basically, if we talk about the effects also now, toxic gases show their effect very quickly. Very quickly, they show their effect. But the poisonous gases are such gases that they do not show their effects very quickly. But sometimes they show, but most of the times it happens that they used to damage your body slowly and slowly. Such things are called poisons. Okay. Examples: cyanide gas, hydrogen cyanide. These are the poisonous gases which used to damage your body. हाँ, तो अब हम बात करते हैं टॉक्सिक गैसेस की। टॉक्सिक गैसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जिन्हें अगर आप सफिशिएंट क्वांटिटी में इनहेल कर लेते हैं अपनी बॉडी में, या आपकी स्किन उसको अब्सॉर्ब कर लेती है, तो उस केस में क्या होता है कि आप जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का हार्म हो सकता है। अब अगर मैं इसके इफेक्ट्स की बात करूं, इसके इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो ये आपका किसी प्रकार का हेल्थ इफेक्ट कर सकता है। अब वो हेल्थ इफेक्ट ऐसा हो सकता है कि भाई बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो सकता है, या फिर छोटा मोटा हेल्थ इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, पॉइजनस में क्या होता है कि आपका ये छोटा मोटा हेल्थ इफेक्ट नहीं देता है, ये जब भी हेल्थ इफेक्ट देगा तो ये सीधे निपटाई ना देगा। ठीक है लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, टॉक्सिक गैसेस की, तो ये जो हेल्थ इफेक्ट देंगे वो ऐसे हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं कि आपका कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे स्किन में इरिटेशन होना, या छाले पड़ जाना, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये टॉक्सिक गैसेस के ही कारण होता है। ठीक है, ओके। तो ऑर्गन भी डैमेज कर सकता है, और कभी कभार अगर आपका ज्यादा कंसंट्रेशन में एक्सपोजर है, अगर ज्यादा कंसंट्रेशन में एक्सपोजर है, तो उस केस में टॉक्सिक गैसेस क्या कर सकती है, आपको डेथ की तरफ भी लेकर जा सकती है। बेसिकली ये नेचुरली अकरिंग भी होती है, और इंडस्ट्रियल वाले भी होते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज में से बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर लूं मैं, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, है ना। तो आपका जो एसिड रेन होता है उसमें तो सारी की सारी टॉक्सिक गैसेस ही जाके मिल जाती है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वो गया आसमान में, है ना। आपका एसिड रेन होता है। I already told everything in English only. Now I am telling these things in Hindi. Okay, maybe you are late, that's why you are not able to attend the starting portion. The first half was for English students, and the next half will be for the Hindi students. Okay, yes. तो आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस के कारण, अब मान लीजिए कहीं पर एसिड रेन हुआ, जैसे कि अभी एक मूवी आई जिसमें कि एसिड रेन के बारे में बात आता है कि अगर एसिड रेन होता है तो पूरे के पूरे हाथ वगैरह जल जाते हैं, पूरा चेहरा जल जाता है उसमें, बारिश के कारण, बारिश के पानी के कारण ऐसा हो रहा है, एसिड रेन। ठीक है, तो ये एक दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको देख लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पॉइजनस गैसेस। पॉइजनस गैसेस में आपका क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो आपकी बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटी में जाते हैं, और फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो डैमेज करने के लिए या तो उसको पूरी तरह से सड़ा देंगे, उस बॉडी के पोर्शन को सड़ा देंगे, या तो उस केस में क्या करेंगे, आपके बॉडी के किसी पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचने से रोकता है। ठीक है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक पॉइजनस गैस है। ये क्या करता है, it basically carbon dioxide mixes in the blood 300 times much more faster than the uh, oxygen, and there it when it mixes with the blood, it forms carboxy hemoglobin, and that carboxy hemoglobin is much more thicker than the original blood. Okay, तो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड आपका ब्लड में मिक्स होता है, तो उसके कारण आपका हीमोग्लोबिन
नॉर्मल ब्लड के मुकाबले ज्यादा गाढ़ा हो जाता है और फ्लो करना बंद कर देता है, ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है, अगर इसके इफेक्ट्स की बात करें तो बेसिकली आपकी जो भी बॉडी के बायोलॉजिक बायोकेमिकल प्रोसेसेस है उन सभी को डैमेज कर देता है, ना खाना पचेगा ना कुछ होगा, पूरा आपकी बॉडी को ही डैमेज करना स्टार्ट कर देता है अंदर से। ठीक है, तो इसके सोर्सेस की अगर बात करें तो ये आपका किसी प्लांट से मिल सकता है, किसी एनिमल से भी मिल सकता है, या कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के कारण भी यह हमें पॉइजनस गैसेस देखने को मिलती है, जैसे सिंथेटिक केमिकल्स वगैरह का अगर कोई इस्तेमाल करता है तो वहां पे मिलेगा, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड ये एक ऐसी गैस है जिसने कि इंडिया में, अच्छा बताइए, इंडिया में किस शहर को हाइड्रोजन साइनाइड ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था? इंडिया के किस शहर को हाइड्रोजन साइनाइड ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो एंड द व्हाइट डैम और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल सही जवाब, भोपाल MP। देखे रेलवे मैन, देखा करो यार वेब सीरीज वगैरह, बहुत प्यारी वेब सीरीज है रेलवे मैन, इसमें कि आपका पूरा का पूरा भोपाल में जब हाइड्रोजन साइनाइड गैस फैल जाती है, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था 1984 83 ऐसे ही कुछ था ना, तो उस समय जिसको नहीं पता उसको बता दूं, at that time when this Bhopal gas tragedy occurred, the hydrogen cyanide has covered the whole of the approximately half of the Bhopal at that time, and most of the people, it caused the effects of this hydrogen cyanide was that it caused irritation in the eyes of the people. Most of the at present also, when the newborn babies which whose parents got affected at that time, or whose family got affected at that time due to hydrogen cyanide, they got paralyzed. The newborn babies are already got paralyzed before, when they by birth they are paralyzed basically. Okay, बिल्कुल, इसको सजा भी नहीं दी गई, अब वो तो खैर वो अलग मैटर है ना, जिसमें कि हमारी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए था बट हमारी गवर्नमेंट नहीं की, तो सबका अपना अपना होता है यार, क्या कर सकते हो, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो बेसिकली कार्बन मोनो ऑक्साइड is produced whenever the carbon or carbonaceous matter is burnt with insufficient supply of oxygen। देखिए अब क्या होता है, जब भी किसी सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाइए, yeah, I will upload these classes in the content video, don't worry about that. I was waiting for 2 or 3 classes, after that I thought I will upload, but if it is your basic requirement then I will upload it to the today only। okay, okay, so बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या पकड़ के चलना है, यू हैव टू कैप्चर अ सिंपल कॉन्सेप्ट दैट व्हेनेवर यू बर्न एनीथिंग इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सो व्हेनेवर एनीथिंग बर्न्स, basically it is a carbon, everything in the world is made of carbon, and whenever a carbon burns it consumes oxygen, and if it has lots of oxygen then it will take two atoms of the oxygen, that is called CO2, and then it will produce CO2। But if you will not provide sufficient quantity of oxygen, there is a insufficient quantity of oxygen, then in that case it will take only one oxygen atom and it will make carbon monoxide। ओके, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम किसी भी चीज को जलाते हैं, दुनिया की हर एक चीज का लगभग कार्बन से ही बनी हुई है। अब अगर किसी चीज को जलाओगे और उसमें वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है कार्बन, ठीक है, जलने के लिए, जब कंज्यूम करता है कार्बन ऑक्सीजन को, आग जो है जो कंज्यूम करती है जब ऑक्सीजन को, तो लार्ज क्वांटिटी में अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के 2 एटम ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। लेकिन अगर एक एटम लिया, इनसफिशिएंट क्वांटिटी में हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, तो उस केस में एक एटम लेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड का बाय बर्थ होगा। ओके, नाउ
Basically, carbon monoxide is a colorless, odorless, tasteless, non-irritating, and it has a specific gravity of 0.967, and it is a combustible, but does not support the combustion. Okay, you should remember this thing. In air, this is important. It in air it burns at about 700 degrees Celsius with a light blue flame to produce CO2. Okay, carbon monoxide can burn in air at about 700 degrees Celsius, and it will produce on burning carbon dioxide. Okay, because it will get more oxygen. Okay, basically it can also make an explosive mixture. Okay, if it is approximately 12% in the atmosphere. The critical temperature is minus 140 degrees Celsius, and the critical pressure is 35 atm. Okay, now production of, this is the most important thing which you have to remember. Production of CO in mines is due to, basically, what are the reasons for the production of CO in mines? What is the basic reason for the production of CO in mines? So these are the basic reasons due to which CO is produced in mines. First of all, oxidation of coal and other carbonaceous matter. Second one is explosives and blasting. Third one is spontaneous heating. Fourth one is underground machinery. Fifth one, methane or coal dust explosion. And the last one is active mine fire. Okay. Now, oxidation of coal or other carbonaceous matter. Basically, whenever whenever a coal is exposed to air and it gets insufficient oxygen, in that case, and there is a temperature is also very high. Whenever the coal is exposed in such a condition where there is a insufficient amount quantity of oxygen, plus the temperature of that area is also very high, then in that case, basically coal starts the oxidation process. Okay, or any other carbonaceous material starts the oxidation process, and due to this incomplete oxidation process, carbon monoxide gets generated over there. In normal condition its percentage is negligible. Okay, but in some conditions where the spontaneous heating increases, then in that case it is not a normal condition, and their percentage is not negligible. Now if we talk about the blasting, explosives and blasting, these are also the reasons for the production of the carbon monoxide. If basically whenever the if we use such type of explosive which is not an oxygen balanced. Okay, if the explosive is not oxygen balanced, then in that case carbon monoxide gas is produced. हाँ बिल्कुल, आफ्टर डैम में ये प्रोड्यूस होती है, आफ्टर डैम्प में प्रोड्यूस होती है, उसके बाद नहीं, आफ्टर डैम्प में प्रोड्यूस होती है. ठीक है, कोई भी देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रोड्यूस होने का सिंपल सा फंडा और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होने का सिंपल सा फंडा ये है कि जब भी कोई चीज जलेगी तभी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि वो उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मिला या नहीं मिला. बेसिक कॉन्सेप्ट है ये. Basically, carbon dioxide and carbon monoxide are generated in one case only, that is whenever something burns. Okay, but the production of carbon dioxide and carbon monoxide depends that if we are, whether we are supplying sufficient quantity of oxygen or not. Okay, now हाँ, तो अगर आपका एक्सप्लोसिव क्या है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, उसमें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, सही तरीके से जितना उसको जलने के लिए ऑक्सीजन मुझे देना चाहिए था उतना ऑक्सीजन मैंने नहीं दिया. If we are not providing sufficient quantity of oxygen for burning of the explosive, then in that case carbon monoxide gas is produced. Okay, CO production is less if the explosive is blasted in a strong rock than in weak rock. Okay, now next is spontaneous combustion. What do you mean by spontaneous combustion? Whenever the coal after the process of oxidation gets starts burning and produces heat,
and due to insufficient oxygen, it produces carbon monoxide also, and this is called self heating, and the self heating is known as spontaneous heating. जब भी आपका कोयला ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करता है, उसके बाद वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है और वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग करना स्टार्ट करता है, वहीं पर स्पॉन्टेनियस हीटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे आग लगने की तरफ बढ़ता है, लेकिन फिर भी उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दैट्स वाई वो क्या होगा, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का जनरेशन करना स्टार्ट करेगा। इससे हमें पता चलता है, इसी के लिए हम ग्राहम्स रेशियो भी कैलकुलेट करते हैं, इसी के लिए हम क्या निकालते हैं, ग्राहम्स रेशियो टू फाइंड एक्टिव फायर। एक्टिव फायर पता करने के लिए ग्राहम्स रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ अंडरग्राउंड मशीनरी, when the machinery is faulty, then in that case carbon monoxide produced, and every machinery produces carbon monoxide if proper lubrications are not used, ठीक है। जब भी आपका मशीनरी फॉल्टी होगा, खराब होगा आपका, ठीक है, आपकी मशीन खराब होगी, तो उस केस में आपका क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, या फिर आपका मशीन में प्रॉपर लुब्रिकेशन आप नहीं देते हो, तब भी कार्बन मोनोऑक्साइड का जनरेशन होता है। आफ्टर मीथेन और कोल डस्ट एक्सप्लोजन, इन दैट केस आल्सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। इफ देयर इज एन एक्टिव माइन फायर इन बिलो ग्राउंड माइंस, CO percentage is dangerous in that case, okay, it is a poisonous gas plus toxic gas also. If it is in less concentration, if it is in less concentration, its effects will be less, okay, and your exposure is less, in that case its effects will be less, but if it will affect you, definitely affect you, then in that case it is said a toxic gas. But if we talk about its effect, if the concentration of this gas is higher, and our exposure is much more longer than the normal, then in that case it will affect your body and oxygen transportation system. In that case it is called the poisonous gas also. बेसिकली इट डिपेंड्स कि उसका कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। अब देखिए टॉक्सिक गैसेस और हार्मफुल गैस, पॉइजनस गैसेस, तो देखिए अब ऐसा हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये प्योर टॉक्सिक गैस है, ठीक है, प्योर टॉक्सिक गैस है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना भी हो, अगर ज्यादा भी हो जाता है तो वो आपकी बॉडी पे ऊपर ऊपर से हार्म करेगा, वो आपके बॉडी को डैमेज करने नहीं जाएगा, ठीक है, वो आपकी बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट नहीं करेगा, वो सीधे निपटा देगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पर मौजूद है तो, ठीक है। लेकिन अगर बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, धीरे धीरे डैमेज करता है, वो एक एक पार्ट को धीरे धीरे डैमेज करेगा। बेसिकली ब्लड के ट्रांसपोर्ट को रोकना मतलब पूरे पार्ट्स को डैमेज करना है एक साथ, ठीक है, तो ये धीरे धीरे काम करता है। ओके, now if we talk about the physiological effects of the carbon monoxide at 0.02%, at 0.02% it causes headache, discomfort and possibility of collapse after 45 minutes. At 0.02% of carbon monoxide, if you are working for 45 minutes, then you may there is a possibility that you may get collapsed. If you work and if you are at rest position, then it will take approximately 2 hours for you to get collapsed. अब लेटे लेटे क्या ही collapse हो गए यार। 0.12%, at 0.12% it will cause palpitations after 10 minutes of at work and 30 minutes at rest, ठीक है। at 0.2% it will cause unconsciousness after 10 minutes at work and 30 minutes at rest. At 0.5% to 1%, death after 10 to 15 minutes of work. Okay, the after effects of CO poisoning are headache, loss of strength and in some cases paralysis, ठीक है। अब अगर मैं CO के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करूं तो इसमें बोलता है कि अगर 0.02% CO कहीं पर है
तो उस केस में अगर आप काम कर रहे हो तो 45 मिनट में ही हो सकता है कि आप कोलैप्स कर जाओ, लेकिन अगर आप रेस्ट पोजीशन पे हो तो हो सकता है आपको 2 घंटे अप्रोक्सीमेटली लग जाए। लेकिन वहीं पर अगर 0.12% आपका सीओ कहीं पर मौजूद है तो उस केस में आपका पैल्पिटेशंस वगैरह महसूस होने लगेंगे। ठीक है, अगर आप काम कर रहे हैं तो 10 मिनट में ही, और नॉर्मल पोजीशन पे है तो रेस्ट में है तो 30 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, बेहोशी छाने लगेगी 0.2% पर अगर 10 मिनट बाद ही काम कर रहे हैं तो, और अगर काम नहीं कर रहे रेस्ट पोजीशन पे तो 30 मिनट बाद ये चीज महसूस होगी। एंड 0.5% से 1% के बीच में आपका 10 से 15 मिनट में अगर आप काम कर रहे हो तो आपकी मृत्यु हो सकती है। It is a very poisonous gas, and it is also known as silent killer. Basically, it affects the victim in such a manner that it will get mixed with your hemoglobin. Okay, the oxygen carrier, which is the oxygen carrier, and it mixes with the hemoglobin 300 times much more faster than the oxygen, and forming the carboxy hemoglobin, and will form the carboxy hemoglobin, which is a stable bright pink compound. Okay, the reaction between the O2 and CO and hemoglobin is reversible and may be represented as, okay, this is the reaction between hemoglobin, which carries the oxygen, and carbon monoxide. Whenever the carbon monoxide, hemoglobin carrying oxygen comes in contact with the carbon monoxide, it will remove the carbon monoxide, basically removes the oxygen from that place, and it will form carboxy hemoglobin, HbCO. Okay, at what rate carbon monoxide will combine with the hemoglobin? Basically, it depends on the three things. First of all, exposure time. What will be the exposure time? For what, how much time you will be get exposed at an atmosphere which is containing carbon monoxide. Okay, the second one is CO concentration, and the third one is the activity being performed. अगर आप ज्यादा ज्यादा तेजी से सांस ले रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, whatever the activity you are doing, it depends on that activity that this at what rate CO will combine to your blood. Okay, now next one is hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide, basically it is also known as sting ram in early mining days. Okay, it is as poisonous as CO. It is also a poisonous gas, and it may cause death in a short time if inhaled in large quantities. Basically, it is a colorless and smells like rotten eggs, slightly heavier than air, having a specific gravity of 1.175. Okay, and it is soluble in water easily. It gets soluble, it gets dissolved in water. Basically, it is combustible but does not support combustion. Okay, the gas burns in air with pale blue flame, and it forms flammable mixture when mixed with the air. The flammable range being 4.3 to 45%. This is the flammable range of hydrogen sulfide basically. Okay, तो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड को स्टिंग डैम के नाम से भी जाना जाता है। ये सीओ की तरह ही बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। अगर आपने लार्ज क्वांटिटी में इसको इनहेल कर लिया है तो कुछ ही समय में आपकी मृत्यु हो सकती है। यह एक कलरलेस गैस है जो कि सड़े हुए अंडे की तरह महकता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.175 है जो कि हवा से भारी होता है। ठीक है, पानी में सॉल्युबल है। ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है लेकिन ज्वलनशील होता है। तो ज्वलनशील होता है तो इसका जो एक्सप्लोसिव फ्लेमेबल रेंज है कहां से कहां तक जलेगा, अगर कहीं पर एटमॉस्फेयर में 4.3% से लेके 4.5% तक अगर ये मौजूद है तो ये क्या करेगा, ये आपका वहां पर आग पकड़ सकता है। अच्छा, H2S माइंस में किस किस चीज के कारण मिलता है? तो बेसिकली आपका जब भी स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है, वेन एवर द स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ द कोल अकर्स, इन दैट केस सल्फर in the form of pyrites, sulfur is generated in the form of pyrites. ठीक है, sorry, the coal containing the sulfur. Okay, now so what is the reason or what are the sources due to which spontaneous hydrogen sulfide is formed inside a mine? What is the reason behind that? So first reason, spontaneous heating. Whenever a coal spontaneous heating occurs in such a coal which contains sulfur, okay,
whenever the spontaneous heating occurs in such a coal which contains sulfur, in that case pyrites are formed. Okay, okay. Hydrogen sulfide is formed in the form of pyrites. And sometimes decay of it is also formed due to the decay of organic matter, especially timbers, or sometimes due to the acid reaction action of acid mine water on sulfides, that is iron pyrites. Okay, and methane blowers and outbursts give small quantities of hydrogen sulfide. Emission from fissures and joints of strata, especially in potash mines. Emission from water of mineral springs when intersected. Emission in association with the fire dam. Improper detonation of the gunpowder. Blasting in heavy sulfide ore. Bacterial action on sulfates due to explosion in sulfide mines. Okay, these are the basic reasons due to which hydrogen sulfide is formed. ओके तो सबसे पहली चीज क्या होता है, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड किस चीज के कारण फॉर्म होता है, तो जब भी ऐसा कोयला ऐसे कोयले में आपका स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है जिसमें कि सल्फर मौजूद है, तो वहां पे जब भी उसका स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा तो उस केस में पायराइट्स का जनरेशन होता है. ओके, दूसरा जो कारण होता है आपका है टिम्बर का सड़ना. जब भी आपका टिम्बर कहीं पर सड़ने लगता है, उसमें डिके होने लगता है, तो उसके कारण भी आपको हाइड्रोजन सल्फाइड का जनरेशन देखने को मिलेगा. माइंस में जो एसिड माइन वाटर. To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.